No problem, sir. Distance. दिवाकर here है. No problem. That is all. Got तुम्हाला कळत नाही. मी सपोज तुम्हाला गोष्ट करणार म्हणलं तर काही प्रॉब्लेम तुम्ही मी गोष्ट करू काम नाही चालत. बसून जाईल कोण ऍडजस्ट सांगत बस जरा किस डॉक्टर भेट इथे ये धाकटा बेसून नमस्कार नमस्कार सर. देवियों सज्जनों नमस्कार. जो भी लोग हमें इस फेसबुक लाइव माध्यम से देख रहे हैं, मैं सभी उन देवियों सज्जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. आज सुबह से ये चौथी मुलाकात है. पहली मुलाकात ली थी हमने महाराष्ट्र के कोंकण से दिलीप हरवंदे जी और वहां की एक जिला परिषद सदस्य थी नीलिमा गोंधली करके. वो भी हमारे दे आर आल्सो बिलोंग टू साड़ी कम्युनिटी. उसके बाद में हमने एक मुलाकात ली थी 12 ज्योतिर्लिंग जो है हमारे भारत देश में. एक परली वैजनाथ करके महाराष्ट्र में है, वहां से एक स्वाति ताटे हमारे साड़ी समाज की सिस्टर थी. तीसरी मुलाकात हमने ली थी इंदौर से, मध्य प्रदेश इंदौर से सुरेश चोपड़कर जी. उन्होंने बहुत ही बड़े वास्तु का निर्माण किया है इंदौर शहर में. और आज अभी जो चौथी मुलाकात है ये है कर्नाटका से. कर्नाटका का बैंगलोर जो शहर है ये अपने भारत देश का 5 नंबर का शहर है. बड़ी जनसंख्या है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर का नंबर आता है. बैंगलोर इज अ वेरी बिग सिटी और कॉस्मोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी है. और उसे बैंगलोर को गार्डन सिटी भी कहा जाता है, फूलों का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है. और उसी बैंगलोर शहर में हमारे साड़ी समाज के काफी समाज बंधु रहते हैं. काफी ब्रदर एंड सिस्टर्स हमारे साड़ी समाज के वहां रहते हैं. हमारी डब्ल्यूएसएफ की जो टीम है वहां की वो बहुत ही अच्छी टीम काम करती है. हमारे डब्ल्यूएसएफ के वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जो वहां के कर्नाटका के स्टेट है, कर्नाटका स्टेट के जो चीफ है उनका नाम है राघवेंद्र पीसे. वो भी बेंगलुरु में रहते हैं. उसके अलावा वहां पे लक्ष्मी वांजरे मैडम है, मातृबाई शिवानंद जी है, दत्त प्रकाश एकबोटे जी है, प्रशांत एकबोटे जी है, और हमारे वर्धन बालू जी है, विजया टोनपे जी है. ऐसे बहुत सारे डब्ल्यूएसएफ के जो कांटेक्ट पर्सन है वो बैंगलोर में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. और बैंगलोर से आज मुलाकात के लिए, इंटरव्यू के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं श्री सत्यनारायण बाबूराव सरोदे. वैसे सरोदे देखा जाए तो कोई मराठी नाम लगता है. अभी इंटरव्यू में तो पता चल ही जाएगा हमको कि सरोदे कहाँ से है, बैंगलोर में कहाँ से आए, बैंगलोर में कैसे सेटल्ड हो गए, ये सभी हम तो इंटरव्यू में जानेंगे. लेकिन पहले तो मैं उनका परिचय करवा देना चाहता हूँ कि हमें बहुत ही आनंद और हर्ष हो रहा है कि अभी हमारे साथ में बेंगलुरु कर्नाटका से है मिस्टर सत्यनारायण बाबूराव सरोदे. हाल ही में he has awarded by the Honorable Home Minister Shri Basavaraj S. Bommai in a recognition of excellent service as an administrative officer at Bengaluru branch of Institute of Chartered Accountant of India. मुझे लगता है कि अभी अभी आपको ये पुरस्कार मिला है. ये पुरस्कार क्या है, आपने कौन सा कार्य किया हुआ है, इसके लिए आपको ये होम मिनिस्टर, कर्नाटका के होम मिनिस्टर जो है उनसे ये पुरस्कार मिला है. ये मिनिस्टर से मुझे याद आया सर जी, माई सेल्फ विजय वक्ते. So I am also working in a secretariat, Mantralay. Okay. I am a section officer there, and my wife, so Nisha Vijay Vakte, is a housewife. She is the president and managing trustee of World Sari Foundation. Me and my wife decided to root out the whole poverty of our society, of our Sari community, before 4 years. And then we established a World Sari Foundation on an international level, and we inaugurated that function on the 29th of October 2017 at Ravindranath Mandir, Mumbai. और मुझे हर से ये कहना पड़ता है, मुझे बहुत आनंद हो रहा है ये कि उस प्रोग्राम में सर 2017 में जब हमने अक्टूबर महीने के 29 अक्टूबर को ये प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम में सर सभी राज्यों से पब्लिक आई थी साड़ी समाज की. हमारा साड़ी समाज है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई बहुत सारा फैला हुआ है. छत्तीसगढ़ में कम है,
लेकिन इन 6 स्टेट में हमारा साड़ी समाज बहुत ही फैला हुआ है। और साड़ी समाज के सभी साड़ी समाज के लोगों के लिए बहुत सारी जातियां पूर्ण जातियां हमारे साड़ी समाज में, उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे हम लोग। और हम लोग ये चाहते थे कि हमारे साड़ी समाज की कोई भी सिस्टर, कोई भी मदर किसी के घर में बर्तन मांजने न जाए, बर्तन मांजने के लिए न जाए, कपड़े धोने के लिए न जाए, झाड़ू पोछा करने के लिए न जाए। अगर ऐसी कोई सिस्टर मदर हमको अगर मिलती है तो हम फौरन उसका काम बंद करके उसको उसका रोजगार उपलब्ध करके देते हैं। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस चालू करके देते हैं कि हम चाहते हैं कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं हमारे साड़ी समाज के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो जो लोग हैं वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके या किसी भी माध्यम से उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्योंकि हमारा और आपका तो हो गया सर जी, हम तो अच्छे सेटल्ड हो गए अभी, हम मंत्रालय में नौकरी करते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन उन लोगों का क्या है जिनको पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, उन लोगों का क्या है कि जिनको आज अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो बहुत सारे ऐसे परिवार है, सुबह कमाते हैं, सुबह से शाम तक कमाते हैं तो रात को खाते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार साड़ी समाज में है। तो हमने मियाँ बीवी ने, वाइफ एंड मी, डिसाइड किया कि एक फाउंडेशन खड़ा करेंगे। फाउंडेशन खड़ा किया सर जी, सारे राज्यों से वहां पे लोग आए थे, अमेरिका, यूके, यूएई, शारजा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर से भी वहां साड़ी समाज के लोग आए थे, जब मुझे कोई पहचानता नहीं था। और 3 साल में हमने इतना अच्छा काम किया है कि हम हमारे काम से वी आर सेटिस्फाइड। तो हमारे साथ में सर आज सूर्य नारायण जी सरोदे सर है। सरोदे सर, पहले बात तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि सरोदे इज लाइक मराठी नेम, इज इट राइट? यस, डेफिनेटली। मराठी, थोड़ा मराठी नेम लगता है। तो पहले तो मैं आपको ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो भी पब्लिक हमको आज देख रही है या यूट्यूब पे हमको कल देखेगी, परसों देखेगी, तो सभी लोगों को ये पता चलना चाहिए, विश्व भर के सभी साड़ी समाज में ये पता चलना चाहिए कि सूर्य नारायण सरोदे जैसा एक व्यक्ति बेंगलुरु में रहता है, बहुत ही अच्छा कार्य है उनका, और वो उनको अभी अभी अवार्ड मिला है। तो उनके पूरे जीवन चरित्र के बारे में, उनके कार्य के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर जी, पहले तो आपका नेटिव, मतलब आप बेंगलुरु से इटसेल्फ है या कहीं से वहां स्थलांतरित होके आए हैं, नौकरी की वजह से आए या बिजनेस की वजह से आए हैं? आपके दादा परदादा कहाँ रहते थे? साड़ी समाज का अपना जो बिजनेस था बुन विविंग का, तो क्या ये आपके परिवार में हुआ करता था या नहीं? कभी आपको ऐसा सौभाग्य मिला या आपके पिताजी को ये सौभाग्य मिला है? दूसरी बात, बेंगलोर में आने के बाद में आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? आप नौकरी कहाँ करते हैं? उसका क्षेत्र क्या है? आपका कार्य क्षेत्र क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। और हमको ये इस बात की भी खुशी होगी कि अगर आपका फैमिली भी हमारे साथ में जुड़ जाए तो हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे जरूर। सर, हिंदी इज ओके ना सर? यस, चलेगा, हाँ। चलेगा। मैं सर, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो हाँ, उनको थोड़ी तकलीफ होती है समझने के लिए सर। नहीं, मैं तो समझ सकता हूँ, फिर भी बोल भी सकता हूँ। यस सर। कभी कभी मेरा आदत है कि आई नॉर्मली यूज मोर विथ इन इंग्लिश। ओके सर, नो प्रॉब्लम। जैसे कि जैसा मुझे आसान होगा, यस मोर सर, कन्वीनियंट चलेगा टू सर, मी, आई विल कीप चलेगा सर, टेलिंग। चलेगा। सर, सबको मेरा प्रणाम। मेरा तो नाम आप बता दिया है, सूर्य नारायण सरोदे। सर, बेसिकली क्या है कि मेरा पिताजी और दादाजी सभी, उनके पूरा परिवार बेंगलुरु से ही नेटिव हुआ है। नेटिव तो बेंगलुरु से ही हुआ है। मैं जानता हूं कि लाइक इन 4 हेड्स बिहाइंड, 4 जनरेशन, वो तो पुणे से आया हुआ है, मैं ऐसा समझता हूं। क्योंकि मेरा तो फादर और उनका फादर सभी ऐसा ही बात कर रहे थे जैसा मैं सुना हूं, तो मुझे मालूम नहीं। सो इनका तो, मेरा पिताजी का तो बहुत एक कम अप फ्रॉम ए बहुत पुअर फैमिली, बहुत पुअर फैमिली। क्योंकि माय ग्रैंडफादर वाज ए फिलोसोफर, a spiritual line. He used to read a lot of adhyatmika books, like spiritual books, and keep discourse with so many places and all. So the income was so poor, and he is unable to lead the family.
and my father was about say around 17 years or so, not 12 years. His father died. That is, my grandfather died. I with and left with two daughters and one son. That is my father. So these people struggled a lot, and then my father left the Bangalore, sat in a train, and went directly to Pune without taking a ticket. Also, he used to tell me, because there was no money for him. He traveled, and 2 to 3 days he struggled to get a job in Pune. Ultimately, he some people recognized him. He has come from far distance, and he was given some food, and they started training him in the tailoring. After 22 years, he came back to Bangalore, recognized his mother and sisters and all, and then he started his journey in Bangalore. So later on, he made me to study, and my mother also struggled a lot. She used to beat me. इतना मारती थी मुझे कि पढ़ने के लिए, मुझे आज तक भी याद है, आज तक भी याद है। एंड मुझे तो इतना पीट पीट कर मैं थक हो जाता था, क्योंकि मुझे first they asked me to join to a convent school, and you will laugh at me if I tell you the real story of it. All that convent this one teachers, they come with the frock and bob cut, something like that. I used to cry seeing them. So then they finally shifted me to Kannada medium. So a lot of struggle I did. Finally, I did my graduation in the year 1981, become Bangalore University, and then diploma in business administration. मेरा तो पहले first job is Kirloskar Electric Company as an apprentice, commercial trainee. I joined there. There was after 1 year, there is an exam all over India. I took second highest marks for the all over India. Wow. That particular time. So later on, I was called to Mafatlal Plywood Company as a cost accountant. So there I worked for 1 year. Luckily, I got a job in state government Karnataka, that is Karnataka Oil Seeds Federation. आप जानते हैं मिल्क फेडरेशन है, ऑयल फेडरेशन है. ऑयल फेडरेशन, that is the founder is Dr. Kurian. You might have heard of it. Yeah, yes, sir. He is the founder of KOF. I started work as an assistant and reached up to manager finance and accounts. Got 5 promotions. Then after 20 years of service, I took a VRS. VRS was introduced. I took a VRS and joined to multinational company as a manager finance. And there about 8 years I worked. That particular Al Kabir head office was at Bangalore, Koramangala. They shifted back to Mumbai due to their family reasons. So then I was forced to quit that, and I was searching a job, and I got a job at ICAI. They called for an interview, and all the interviews I have passed, and they immediately asked me to report immediately. So I joined there. It was a really tough job where you can just imagine 15,000 chartered account members there, 35,000 students, and 300 to 500 vendors, and nearly 75 employees. Okay. To take care of everything. Yes. I was directly reporting to chairman. Okay. The chartered accountants are so hardworking, intelligent, dedicated. The profession itself is as such, it is very difficult to get out of that, but passed out to this particular chartered account. आप जानते तो इतना मुश्किल है, तो फिर भी all these chartered accountants members, one important thing, Bangalore is the biggest branch
in India, not Mumbai, Bombay, Calcutta, Delhi, Chennai, something like that. Because you feel that 15,000 members in one branch is the biggest one in Bangalore. So you know that all these people are so dedicated, and their profession is at the top peak. And these people, they are all called as a nation builders. They are the partners in nation building for the India. They are supported backbone. They are getting lot of revenue to the government through their clients by direct tax, indirect tax, everything. So here the workload and the pressure, tension is always mounting because regular programs, regular classes. The programs regular because it is called CPE programs, compulsory, that is mandatory programs, peak hours. Every year they have to complete 30 hours, something like that. All these has to undergo, and they are all joining together and conducting too much of program. Not even a single 1% mistake can be tolerated. It should be perfect in all respect. Always they expect that. And every year the chairmen will keep changing. Every year, every opportunity will be given to every new chairman. So each and every chairman will be challenging and thinking about their particular ideas, and all implementation has to be done, and the achievement has to be done. Every week, every month, activity report will keep going to head office, regional office, and regional office also, the chairman will be there, and head office president will be there. They will be watching every time. They will be observing the activities of the branch, and the history goes like this. In particularly as an administrative officer in my position in ICI Bangalore, not more than 2 years consecutively worked by any of the employee. They cannot, they will, after 1 or 2 years, they will get out of this place. Not that I'm praising or myself about like that, but it is the fact that I stood more than 8 years and I served like anything. During my period, we got the Best Branch Awards for the all over India 2 times, especially during this 2020, we got a Best Branch Award, though there was a COVID lockdown. Even then, we conducted plenty of programs, plenty of classes, all online. And it was so appreciated by the president from ICI, and they called us. We are the first branch, got the Best Branch Award. That is highly satisfactory. All looking at this, and we constructed one particular members launch at Bangalore, where it's the first of its kind anywhere in India. That launch was so superb. Superbly it has come out during the lockdown. I worked day and night to complete it with all the supports of the members also. And looking all these aspects, they thought that, and of course, I am 62 years now. At the age of 60, of course, a retirement has to take place. But they asked me, requested me for another 2 years to work. I accepted it challengingly. Happily, I did it, really. And 62 years I attended. And they thought that I should be honored properly with a great respect and recognition. So they invited the Home Minister for members launch inauguration also. The inauguration was so superb. And that period, Home Minister came and he apprised, and they gave me a silver plaque presented to me in presence of members attended for the program. And it is recognized. They uttered that
people should work hard, not only to that, smart working and dedication and result oriented. It is all I did it. My concern is just by achieving an award is not the end. It is Yes, the yes. beginning. It is the beginning of the responsibility You're of a definitely person right, sir. Yeah. who has achieved it, has to train up or share his ideas, how I surpassed all hurdles, ups and downs, everything to younger generation. And it should be like a role model. And see, there are so many examples I can give you how tough situations I surpassed. See, suppose if I brief that and give a knowledge, definitely it should be like a chain. The entire generation, forever, it should keep going. One has to develop ultimately the humankind has to ease, and we have to live happily, enjoy. For all this, we should not give it up. As you decided, you never give it up. I can make out. Similarly, what what may come, whatever it may be, once I decided, I should never give it up. What may be, that is the mind secret. And honestly speaking, definitely, whoever the officer may be, either he is IAS, IRS, IPS, whoever it may be, it is better to practice maintaining a proper diary, office diary. Note down, jot down every points. Human being cannot record everything. We are not like computer like that, but whatever that I record it immediately, have to follow up and make a checklist, do it properly, and we have to appreciate our subordinates, and we have to respect to the superiors, and we have to love each and every one, and we have to accept however he may be, whatever he may be, and we should not criticize. These are all the certain points where one has to cultivate. All this I got it learned about for 12 years back. There was one great Guruji. Even now he is there in Raichur. His name is Gurudat Guruji. Gurudat Guruji. He had given us such a personality development programs where whether you believe it or not less than 800 peoples were admitted personally by me, took them to the classes. Every year, at least 100, 200 like, and everyone has given super responsibilities. I mean, achievements, and they are so happy. All these cultivations happened during that time and helped me, and I achieved it. Of course, during my age of after 7th standard, 8th standard will be a sort of a turning point where I was not interested. But one of our Sakulasali teacher, B.G. Nagaraj, you might have heard of him, B.G. Gangadhar, brother, B.G. Nagaraj, he really made me to go to the school and study again. Later on, I got to know a wonderful teacher in yoga. He is in ISRO. ISRO, he is now retired. His name is Murli, Mr. Murli. And he trained me in yoga, spiritual life, philosophy, all this. Sir, one has to have and believe in God always. He has to believe in God and maintain that rhythm of praying and puja, part, all this. These are all really an additional points where a man can easily go up to the ranks, to the
pinnacles where I have seen a lot of chartered accountants. They do worship their God. They pray. They do bhajans. These are all most important. Not only technology or high fashion way of doing it, ultimately it reaches to a sort of agony where a satisfaction cannot be made. A life satisfaction and our work satisfaction will go together only we also to be with our family. Yes. I thought I have given a long speech. How they support it? Really, my wife, I'll just call Shanta. My wife really she's a very gentle lady, and she used to every time, even if I miss my track, she will remind me. She follow up. Namaskar. Namaste, sir. Her name is Shanta Suryanarayan Sarode, of course. And she has given me a lot of valuable, what I can say, techniques, tips, so many things. Because not that she is young, but she is really an experienced from the background of big joint family. Her father is S.N. Gangadhar Rao from Bangalore, Okay. and her Surasgarh. Her father was president for the Sakulasali community at Bangalore for more than 10 years. Wow. And her father made me to continue his position at Sri Jiveshwara Vidyabridhi Trust. Yes, I know it. Yeah. Shivanand might have told you. Yeah. Yes. So I am there as a joint secretary. Wow. And we conduct biannually, every 2 years once, we conduct big program. Of course, we give every year scholarships, books to so many students. A lot of this one support we do it. At the Bhagwan Jiveshwar Sports Association, this is there different, also, there also, yeah, it's there. This is different, no? Yeah. It's a different. There have been up as an advisor. So I'm one of the advisor for Bhagwan Jiveshwar Sports and Cultural. Okay, Sports and Cultural Association. Shankar Shendra. He knows very well to me. Prashant Ekbote is the secretary. Prasad Ekbote is a secretary. He is very good, educated. Of course, Shankar Shendra is really intelligent and very smart in his work. And a lot of I heard a lot about him. His planning and the visions are, I have seen personally, perfect. But out of my experience in ICI and working with Gurudat Guruji in the Sahajasthiti yoga classes for several years, I share my experience. I give a lot of tips to this particular, both the trust. They are all really lovely people. They always ask me to join. Most of the time, I cannot attend, of course, because of my busyness. Now, for the last February 28, I retired from the job. Now, I'm totally free. When, sir? When? February 21st. Last month. 2021. Okay. You retired from the service, yeah? Yes, retired from the service. Sir, one more question. Please. When and where you met, ma'am? That is through relation. Through relation. See, before marriage, I did not see her. Okay. Yes. It is through my parents. So arranged marriage. Yeah, it is totally after arranged. That, love. Yes, definitely. Fighting love. A sort of a love, always sharing for betterment. Yeah.
a lot of arguments will keep going on, because her vision of thinking, my vision of thinking should match ultimately. To match that, we quarrel. Not that I myself is great, my opinions are perfect, something like that. But to share each other, we do it perfectly. And my two children's, my first son is Vinay Sarode. I'll just call him Okay. Vinay Sarode. He did What are you doing? Vinay Sarode. Yeah, Vinay. Hi. Namaskar. What's you doing, Mr. Vinay? I have completed masters in commerce, and I was working for Narayana Hrudayalaya Hospitals as an internal auditor. Then Okay. later on, I did my certified management accounting (CMA) Of of United States. Then I went on to work for Ernst and Young, GDS, Global Delivery Services, EY, EY organization, global You're organization. bachelor, na? You're not married. Yeah. You're bachelor. I'm not yet married. Is your elder son, na, sir? Sir, Is your elder son? one more son is the second. Yeah, I'm He's elder, na? He's elder. Yeah. He is eldest. Younger one will come. Yeah. Okay. Divakar, come. Yes. He is my Hi, younger son. younger son. Hello. Yeah. Hi, how are you? Yeah, fine. Thank you. Good. Yeah, what about you? So I've completed MBA, the Master of Business Applications. Yes. I'm now working at ANZ Bank. Australia, New Zealand Bank. Yes. Okay. In Bangalore? Yeah, at Bangalore itself. In Bangalore. Okay. Now presently both of them are work from home. Okay. So both of them are well cultured. That is because of my wife. Yeah, okay. That You credit give all goes- the credits to your wife, huh? Yes. I give the credit straight away to her, and both of them are highly cultured. Definitely. Yeah. They do well in all the exams. They have done very good marks, Okay. and they got the jobs immediately. And I will swear you, I have not influenced anywhere to both of them. They themselves got the jobs by virtue of their merits. They themselves settled well. Okay. They are not asking my help. And of course, the need of helping me was not arised at all. That is how it is, really. So you retired in February 2021, is it right? Yes. Yeah, now you're free for service. Okay. But before that, how you participated in a social work? Before that, I used to participate weekends and late in the evenings. Yes. Now, since I have retired, we are coming out with a own house. We are getting constructed near to this place, around 9 kilometers. Okay. From my present place, it is 9 kilometers. Okay. So every day my supervision is definitely required there, and I'm daily traveling to that place. And by the end of May, it will be ready. Soon after that, definitely I can think myself what best I can share. So what is your future planning after the retirement to the society? Sir, my future planning, definitely it is to help to the society. It is really dedicated. My mind has been decided, but ultimately that is the second preference for me. My first preference is my family has to settle well. Now, of course, they are in the job, both the sons, but my responsibility should get them married. Okay. And we will definitely help you, sir. Sure, that happens. But my way of real responsibility is to see that it has to happen properly and smoothly in time. So immediately after that, my second preference may become the first preference as community support, help, coordination, whatever. People like you, if it is recognized, of course,
already have served in this spiritual period, that is Sahajasthiti Yoga, for more than 12 years. And then more than 8 years, I working with the so-called this Jiveshwara Vidyabridhi Trust. Okay. And then Sri Bhagwan Sri Jiveshwara Sports and Culture, there Okay. more than 4 years. Similarly, it will. They are doing a very nice job, sir. Sure, These sir. all guys like Shivananda Yeah. Matrubai, Manjunath Sarode, Yes. Prashant Ekbote, and Correct. Mr. Chandra. They are doing very nice work. Sure. Suppose if I cannot able to attend the meeting, they personally call me and Okay. discuss with me, Okay. and they really love me joining there always. They appraise like anything. But of course, earlier it was not happening as I or they expected. But hopefully it happens properly in future. God willingly. God willingly. सर अभी हमारा जो साड़ी कम्युनिटी है ना? Yes, sir. Yes, sir. पूरे भारतवर्ष में है, ठीक है? आप Yes, sir. सब लोग हमको अभी लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब पे भी देखेंगे हम लोगों को। Across India. जैसे मुझे लगता है कि मारवाड़ी समाज है ना? Yes. बहुत ही अच्छा संपन्न और सधन समाज है, सभी के पास में पैसा है, कोई गरीब नहीं है उसमें। Exactly. आप अगर पंजाबी लोग देखेंगे तो उसमें बहुत ही इक्का दुक्का मिलेगा गरीब आदमी, नहीं तो बाकी वो सभी सधन लोग हैं। ओके, Correct. आप गुजराती लोगों को देखेंगे तो वो भी काफी सधन है, एक दूसरे को पकड़ के चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को। जैन धर्मीय जो जैन रिलीजियस लोग हैं, जैन, करेक्ट, वो भी मतलब उनमें भी कभी कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा हम लोगों नहीं है। वो भी एक दूसरे को पकड़ के बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना? Exactly. मुझे लगता है कि साई समाज में भी ऐसा होना चाहिए। Sir, my long back I thought of this. Very long back I thought of this. I discussed this with my brother-in-laws. Yeah. Because as I was talking to you, the Sahajasthiti Yoga Foundation, where thousands of Marwadis, Jains are there. I've seen they give loan to the poor people for lowest rate of interest to grow their economy and family incomes. They support it. And obviously, the people who have taken the loan promptly repays it. Okay. That is most important. Yeah, definitely. Suppose if we form a financial support to poorer people, okay. They should promptly come back by repaying it. Yeah, repaying it. They should not lie or make some faltu work. Yeah. Then the people who are ready to, help to the financial poor people will also go back. He will also circle back from. वो repay तो करना ही चाहिए, अगर वो repay नहीं करेगा तो दूसरों को कैसा help होगा? This area is gray. This is the one area gray, and there is a big hitch in the community. Is that every 1 out of 10 will pulling the legs of other. This should not happen, and all their mistakes they will hide it or suppress it, and they will purposely rise the mistakes and all comments for the third person among the community. Yes, sir. Yes. And especially female people in our community, they will share so many secret things with others. सर, आप अभी जो लाइव देख रहे हैं, है ना? या जैसे हमने हमारे लिए तो बहुत कुछ कर लिया है अभी. करेक्ट. अभी कुछ लोगों के लिए भी करना चाहिए. But sir, ultimately one more thing. Yes, sir. This women in our community are more strong. More strong than any community. I have observed it. They have very great willpowers. Okay. Willpowers. That has to be encashed. Yes, definitely, sir. Yeah. 100%. And they have got wonderful ideas. Yes, sir. We have to dig them and take
these ideas. इसके लिए सर बैठ के इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए। Definitely. There is one Mahila Ankini Samaj, Ankini in अंकिनी Bangalore. दशांकिनी, हाँ। Ankini, one association is there in Bangalore among the group of women. And of course, they will be doing good job. All of a sudden, stop. After some time later, again they will start. सर हमारे समाज में जो अभी ये वीकर सेक्शन है, फाइनेंशियली वीकर लोग हैं जो है ना, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारा भी समाज जैन जैसा हो, मारवाड़ी जैसा हो, इसके लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? प्लीज गिव अस अ गाइड। As per our experience goes, we have to support them by giving some financial support, of course, and we have to apprise them and follow up in improving them. We should not give them money and forget it for a period of 1 or 2 years. We should keep follow up them and encourage them. And suppose if they require any technical guidance or knowledge or about the information of the market, how it is going on, we have to feed them, give them ideas. And suppose if they are not doing good, it is our responsibility to go them and guide them and encourage them. Okay. And they should not go out of the way or forget that particular task, whatever that they have taken responsibility to grow. इसके वजह से हम कभी-कभी टाइम हुआ तो जाके मिलना है, उनसे बात करना है, प्रेम विश्वास से होम विजिट प्रेम विश्वास से बढ़ना है, और उनको हमारा घर में भी बुलाना चाहिए. We have to invite them. Yes. And make them a big family like. And they should not feel that I cannot make the payment, something like that. They should feel that मैं पहले उनका पैसा देना है, ये मेरा responsibility है. That should cultivate in their mind. Has to happen from person who is giving the loan in such a way that they have to encourage and make their mind to positively to reach. Yes, sir. ये थोड़ा education चाहिए मेरे ख्याल से. Sir, I have some ideas. I have more ideas. Please. वो मैं आपको अभी मतलब उतना समय नहीं हमारे पास में कि मैं आपके साथ में वो डिस्कस कर सकता हूँ. लेकिन when will I come to Bengaluru? Then I will definitely discuss with you and Mr. Shivan Matru bhai, Raghavendra Pise and all our guys, WSF contact person. Sure. और देखते हैं कि अगर वो मेरे विचार जो है, मेरी आइडियाज कुछ है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाल रहा हूं मैं इसके लिए. मुझे ये चाहिए कि इसके लिए ना एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, हर स्टेट में, हर गांव में, हर सिटी में एक परमानेंट सॉल्यूशन हो. डेफिनेटली. मतलब अगर आपको कभी बिजनेस का प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा. करेक्ट. आपको अगर फार्मिंग का कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको सॉल्यूशन वहां मिल जाएगा. आपको जॉब का प्रॉब्लम आता है, आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा. आपको गवर्नमेंट जॉब का प्रॉब्लम आता है, आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा. आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको वहां सॉल्यूशन मिल जाएगा. आपकी शादी हो गई है लेकिन आपके बीवी के साथ में झगड़े हो रहे हैं, उसको भी सॉल्यूशन वहां मिलेगा. मतलब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा एक मेरा आइडिया है, ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर स्टडी किया हुआ है और वो फाइनलाइज किया है. बस अभी ये कोविड की वजह से मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ. करेक्ट. फिर मैं हर गांव में, हर शहर में जाके लोगों के साथ में डिस्कस करके उसको मैं उनको बोलना चाहता हूँ ये परमानेंट सॉल्यूशन है. करेक्ट, एग्जैक्टली. कोई भी अगर हमको बीमारी होती है तो केवल ऊपर से कोई मलम लगाने से वो बीमारी ये नहीं होती, उसको जड़ से निकालना जरूरी होता है. श्योर. जड़ से मतलब उसको रूट से निकालना उसको बहुत आवश्यक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए. मतलब साड़ी समाज के किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी समस्या हो, जन्म लेने के बाद से लेके मृत्यु तक, करेक्ट, मतलब उस व्यक्ति ने, वो जब पेट में है, वो व्यक्ति अगर पेट में तब से लेके उसके मृत्यु तक की उसकी कोई भी समस्या हो तो हम वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन से एक ऐसी योजना है मेरी कि उसका हर बात का कोई भी सॉल्यूशन हो.
सर उसको वहां पे मिलना चाहिए। ये इसके मेरी आइडिया लिए है, परफेक्टली ये राइट। मेरा डिस्कशन में वहां पे जब आऊंगा तो मैं जरूर करूंगा। मेरे सर को वर्ल्ड, यस सर बताइए सर। सॉरी फॉर इंटरप्शन, नो सर, मेरे को एक आइडिया आ रहा है, जैसे मैं भी पहले सोच रहा था ऐसा। सी, our Solly people should buy any product from Solly dealers only. ओके Buy ओके from Solly, ओके sell it to Solly. So जो भी margin होगा वो margin Solly people only will enjoy it. Instead of I am buying some tomatoes from some other third person, I should go and get the tomato purchased from a Solly dealer यस who सर, यस सर, sells the tomato. If I यस buy सर, that, यस सर, यस सर, यस that margin, let it go to him. या डेफिनेटली सर, We do business among us only, यस सर, among our community. यस सर, So that economy will develop within that circle. या This is also one among the point. यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर आपको वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में थोड़ा बहुत तो पता है ही। है तो है, यस definitely. सर, यस सर। ये हमने 2017 में वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अभी 3.5 साल हो गए। Yes, सर sir. हमारी सबसे बड़ी विशेषता ये है सर, वी आर नेवर डिमांडिंग डोनेशन, Yeah. नेवर डिमांडिंग डोनेशन। बिल्कुल हम डोनेशन किसी के पास में भी मांगते नहीं, फिर भी डोनेशन न मांगते हुए बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट भी करते हैं और हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। Great. 3.5 साल की उम्र है सिर्फ। द एज ऑफ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन इज ओनली 3.5 ईयर। Baby. आपने भी कभी किसी पोस्ट में सुना होगा या देखा होगा, या कभी व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर कभी हमारी पोस्ट आती हो तो उसको देखा होगा। सो व्हाट इज योर फीलिंग रिगार्डिंग वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन? Sir, World Solly Foundation is still young and small. ओके सर, It cannot do the catering to the needy people as a whole presently. ओके सर, At the same time, and how best you can mop up the funds. Mopping up of the funds for the foundation is basically to be planned. ओके सर, ओके ओके, That यस inflow increases, definitely your activity will flourish like यस anything. सर, यस। विदाउट फंड वी कांट डू एनीथिंग। Definitely. यस सर, यस See, सर, ultimately we are uplifting the downtrodden people. यस सर, यस यस सर, So यस this is the basic idea. सर। Our motto. वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी Motto. इंपॉर्टेंट। यस सर, To uplift यस by way of 90% of it by financially only. 10% maybe a moral support can be given. या एब्सोल्यूट करेक्ट सर, एब्सोल्यूट करेक्ट। This then 90% of the financial support, how we can do it? We have to plan it, budget. या डेफिनेटली, या सो Budget it. Even if we budget it, it exceeds because unforeseen, untoward incidents. So many things happens. Suddenly, even for example, insurance people cannot bear if any calamities happened. Of course, but for our reach, whatever is possible, हमारे तरफ से जितना भी कलेक्शन कर सकते हैं honestly, हम Yes, sir. जरूर करना है Thank you, और जो भी हम हेल्प करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन पूरा देना है। बिल्कुल सर। Otherwise, Yes, sir, yes. people will think he has collected 10 crores. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. I think he has taken 2 crores, 8 crores only he has Yeah. helped. Yes, sir, yes, People sir, will yes, talk, sir. sir. Though you have collected 10 crores, if you have helped 12 crores, that extra 2 crores, whatever that you have spent, Yeah. people will still say Yes, 8 sir. crores only you have done it. Yeah, sir. Definitely correct, sir. बहुत ही important बात कही सर आपने। बहुत ही हाँ। important बात कही सर आपने। This has to be erased in the minds of the public. I mean, Solly people. Yes, sir, yes, sir, yes, sir, yes, sir. Oneness has to develop. What Vijay sir will take a decision, I like that. ऐसा होना चाहिए सबका माइंड में। Yes, sir, yes, sir, yes, sir. जैसा नहीं होना चाहिए कि विजय सर ने 10 करोड़ कलेक्ट किया, 8 करोड़ दिया, ऐसा नहीं रॉन्ग सर। थिंकिंग। सर जी मैं आपको बताता हूँ कि एवरी फाइनेंशियल ईयर
हम जो Yes. हमारा ऑडिटेड स्टेटमेंट होता है डिपॉजिट और एक्सपेंडिचर का, उसको हम वायरल कर देते हैं, पूरा पूरा Sure. इंडिया में वायरल कर देते हैं, सब लोगों को वायरल कर देते हैं व्हाट्सएप पे। सर मेरा जो नेटवर्क है ना, वो नियर अबाउट 9 to 10 लाख पीपल तक मैं पहुंचता हूँ। इतना Great. मैंने मेरा अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ है। सभी Transparency. लोग एक साथ में जुड़ नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभी बार बार उसको देख सकते हैं। इतना Correct. अच्छा नेटवर्क बनाया है। 400 Sure. 450 ग्रुप है सर मेरे पास में। और Great, मैं sir. डिजिटल सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छा यूज करता हूँ इसके लिए। Oh, मैं great. कोई भी ज्ञान बांटने वाली कोई भी बात नहीं डालता हूँ, कोई सुविचार, कोई बड़ा थिंग, अच्छा थिंग वगैरह, कोई सिर्फ वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को कोई भी अच्छा काम हो तो उसका मैं जरूरी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। और ये जो Sure. आपने बात कही अभी एक्सपेंडिचर की वगैरह, तो ये हर साल अगर कोई बड़ा प्रोग्राम भी करे हम, तो उसका भी पूरा का पूरा हम वहाँ पे डालते हैं। Transparency देना चाहिए. यस सर। सर आप आए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा गाइडेंस किया सर जी। आप एकदम बहुत ही मोटिवेशन था आज, मतलब जो लोग भी हमें आज देख रहे हैं या कल देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, Yes, तो sir. उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशन था। आपकी आखिरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि Yes, विदाउट sir. फंड यू कांट डू एनीथिंग। Sure, sir. और उसके लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि फिर भी किसी के पास में डोनेशन न मांगते हुए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे फंड फंड रेज हो। That is, sir, you have to take the guidance of the economically strong professional people यस and सर। यस chartered accountants. या डेफिनेटली सर। They definitely guide us how यस सर। to यस mop up the funds. यस सर। यस 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 Sir, you should not hesitate. I mean, collecting the donations. ओके 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 सर। If you have decided that I should bring back all the downtrodden people to the top level in the society, यस then you should forget or don't hesitate ओके सर। raising the funds. Yes, I will Raising try, the sir. fund. I will try, sir. I will try, sir. I will try, sir. Suppose if you think that someone will think us in the wrong path, that I'm manipulating something, Hmm. that should not come to your mind. As long as you are honest, Yes, sir. perfect in your collection and Yes. expenditure, Yes, sir. you should not give any scope or opportunity or to think like that. Whoever Yes, sir. says a wrong thing, Okay, sir. that is, you have to make it as a challenge. Okay, sir. लेकिन I will definitely discuss with you, sir, when I will come to Bangalore, sir. Sure. सर आप यहाँ पे आए, हमको अच्छा मार्गदर्शन किया। आज हमको पता चला कि सूर्य नारायण सरोदे सर कौन है, वो किस संस्था के लिए काम करते हैं, और उनको जो होम मिनिस्टर से अवार्ड मिला वो किस लिए मिला, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। और दूसरी बात है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया आपने। इसलिए सर मैं आपका, आपकी पत्नी का, आपके दोनों बच्चों का बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और जस्ट आस्क यू फॉर टू फिनिश, प्लीज प्लीज सबको बुलाइए, मैं नमस्कार कर दूंगा। और सर आपसे मैं अनुमति चाहता हूँ कि या प्लीज लैपटॉप थोड़ा दूर रखिए, लैपटॉप तो सब लोग आ जाएंगे। इट्स अ वेरी नाइस एंड आइडियल फैमिली सर, वेरी नाइस फैमिली सर। एंड मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इसी के साथ आपका धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं इस मुलाकात को, इंटरव्यू को दी एंड करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जीवेश्वर। Jai Vijay sir. Thank you, sir. Thank you.